तो लास्ट सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था? I think we have discussed the functions. String. Oh, okay. We have discussed the Yes. string. Okay, let me come to the string class. Okay. So yesterday we have discussed about the string class, and today we are going to discuss a new topic that is called array. Okay. So let me create a new file for that. So I'm creating a new class like array demo e or e right demo. Okay. So I will start from the problem statement. Okay, what is saying that array demo is already there. The batch is white. We have completed the array. No. So why it is showing you in your batch? 21st, let's make automation. Why it is showing it here? I've covered the loops also. No, Pradeep, I don't think so. Okay, why it is showing so? Maybe by wrong. I have just put it here. Okay, let me show. Let me create a new one. Maybe I have created in the wrong project. So let me create a first class. I will say array users. So let me create a first class. Okay, so first of all, I'll tell you that whenever you have to store a single numeric value, how you are going to store, just here. You will create a numeric variable int a and you will store it, right? Yes. Okay. Now, the thing is that if you have stored 5 numeric values, if you have to store 5 numeric values, definitely you will create 5 variables, int a, int b equal to something like 6, then you will create int c, something like that, 2, and then we will go for int d and something like that. You can take the example of 8 also. So it means whenever we have to store 4 numeric values, we have to create 4 reference variables, or you can say 4 variables, then we can store the 4 values. Okay, and how they are going to be stored in the memory, let me show you. This is your whole memory. Yes. In this whole memory, what happens that actually maybe a few of you know that your memory is actually divided into small parts. Okay, that's why this is the reason if you go to the market and ask somebody that I want a memory of 257, so they will say no, the memory comes in a fixed size like 128, 256, 512. You all know, yes or no? Yes. And even you will see, if you go and ask for a hard disk, I want a hard disk, they will say the size of the hard disk is 128 something, 1 terabyte. You can't say, okay, can you give me a hard disk for 1.3 terabyte? No, because the size of hard disk is fixed. And what is the reason behind that? Actually, what happens that your memory, whatever memory you can say you are going to use, it is a RAM, it is a ROM, anything is, it is a primary memory, it is a secondary. Actually, your memory is divided into small parts. So I will take the example here. Suppose this is your memory. Let me take the small one. And for example, that is not the exact scenario, but for example, it is, you can say, somebody else joined. For example, suppose it is divided into the 4 parts. In this way, you can say 4 this part, and I will try to divide horizontally also 1, 2, and 3. Okay, so you can assume it. I'm just not giving the exact example, but I will try to tell you that what is the actual concept behind the array. Okay, so now the thing is that when these 4 values are you have written in your program, so how they are going to store, when the control will come to the line number 7, what it will do, it will store 1 value in 1 block. Are you getting my point? Yes. So you can assume that the size of each block is 1 byte. This is the whole memory, and each block is one byte and 1 integer. If one integer need 1 byte to store, so it will do one thing in your memory. It will store anywhere for anywhere, and then what it will do, it will create a reference variable a and point to that memory. Is it okay? Yes. So it will create a and then it will point a to this one. Okay, in the same way, when the control will come to the line number 8, it will see
int b equal to c. It means in the memory anywhere it will go and store this one and just create a reference variable b and will point to that one. Okay, I've created 2 1. So it will create a b and then will point to that location in the memory. So in this way also it will create c. C means 2. So I'm taking the example. Suppose it is storing 2 here and it is c. Okay, now at last, let me take the example of last one, that is D. So D is 8. So let me take the example, it is stored. Okay. So in this way, values are stored in the memory. Other than that, if you have more variables, what happens that anywhere, if you have more variables, or you can say like, for example, if we are storing few more variables, like take the example, let me take one more, A, B, C, D, E. E I'm storing 1. So in the same way, it will store in the memory anywhere. It is not fixed that it will store a particular location. So I can take the example, it is stored, suppose it is stored here. 1 and it is going to be pointed by E. Is it okay? This thing is clear that whenever you store any value, that value is stored in the memory and that is referenced by the variable. Is it okay? Yes, sir. Yes. So now tell me one thing here, how many values you have stored in the memory? We can take the example 1, 2, 3, 4, 5. It means in the memory, 4 things are stored in the memory. It is taking the memory for storing values 4, 2, 6, 1 and 8. And at the same time, these reference variable, how many reference variable you are creating in your program? How many? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So now you will see actually in the program, 2 things are happening. 4 reference variables are created, 5 reference variables are created, and 5 values are created. Okay. So reference variable also takes some memory. Reference variable also takes some memory. It means A, B, C, D, E. They are also taking some memory to run your program. Now I will tell you one thing. If you want to save some memory, first thing, if you want to save some memory, I can give you the option that if you can store all 5 integer value with the help of one reference variable, it will save the memory in terms of reference. Yes or no? Yes. Are you getting my point? What I want to say here, you are using 5 reference variable A, B, C, D, and E to store 5 values. I am giving you option that using a single reference variable, you can point or store multiple values. So definitely you are going to save the memory for rest of the 4 reference variable. Yes or no? Yes, sir. So how it is possible? There is a concept that is called array. So whenever you want to store a single value with a single variable, you use this way. But whenever you want to use multiple values you want to refer or store with the help of one reference variable, there is a concept that is called array. In the array, after integer or after any data type, just write a square bracket, and right side you have to write new, and then you have to write the data type int, and in the bracket you have to give that how many elements you want to store. How many element current scenario we want to store? 5. 5. Okay, so this is called normal integer variables. It is called array, is a array of integer. It is called a array of integer. So R is presenting here, A is presenting a simple numeric value, and R is presenting a integer of N. Is it okay? Yes, sir. So now the question is that how a single reference variable can point to 5 variables, how single reference variable can store 5 values or 6 values, how it is possible. So you will see in case of array, I will give you, let me open another paintbrush and let me show you what happens in case of array. Again, let me divide same thing. Let me divide in 1 part, 2 part, 3 part here. 1. 2. So in case of array, what is the benefit? When the control comes to this line, when the control
when the Java takes its control to this line, it tells Java that please, first of all, right side, it means store a block of integer for 5 values. How many values it is to? It has to block the value, block the memory for 5 values. So it means how it is going to block. It will do one thing in the memory. It will take 5 blocks at same location. Are you getting my point? Yes. So it means that's why I'm showing with the red block. First of all, it will show, oh, we have to store 5. So it means it will make a block of 5 1. So let me show you how. So we will do in this way. Let me take the example. This one. So let me do one thing. Let me add one more row to make it more clear. So let me add one more row here so that I can show you. You can watch clearly. Okay, now what happens in case, because you have to store 5 values. So first of all, Java will actually cover 5 blocks in the same sequence. Are you getting my point? Yes, sir. Yes. Because it want to store 5 values and one value need 1 byte. So it will in one go, first of all, it will occupy the whole block which contains internally 5 memory locations. Now the whole block is pointed by a single reference variable that is called R. Getting my point? R will not point a particular memory. R will point to the whole block. This whole red block is referred by the R. Getting my point? Yes. So now what happens, because this memory, this whole block is internally divided into the small blocks. Every small block is actually how they are identified. They internally maintain an indexing. First is called 0 indexing. Second called 1. It means something like a position. Something like a position. 3 and 4. So in the array, what is the concept? Whenever you declare array can be of the integer, array can be of string also. For example, if you want to create a string array, string, this one, str, let me str, arr, and you have to write new string. And how many string you want to store in your array? Just give new string and just give the sign. If you want to store 4 string, this one. Is it okay? So array can be of any data type. Only the concept of array is to store multiple values with the help of single reference variable. That is clear? Yes, sir. So now what happens? Whenever you are declaring the variable in this way, internally it make a whole block of 5 values, and internally of that block is maintaining an indexing. Like this is the first block 0, then first block is 0, then 0 it is 1, 2, 3. So indexing is start from 0, not from 1. Getting my point? Yes, sir. So how they operate on the index, how they operate on the array, whenever you want to store some value, how you store? Just see here, you use R, reference variable, and you use a square indexing 0. So it means you are using a single reference variable R, but which part? 0 part. 0 location of the R, and you can store any value like 4. Getting my point? Pradeep. Yeah. Here I have one small doubt. Yeah. Can't we mention all this int value in one para? Is it possible? You are saying that I didn't Above get one, above one, yeah, that one. A this equal one. to 4. No, above one. You write 4 para for int, right? Yeah. These, yeah. So that's why I'm saying that if you want to store in 4, if you want to, you are talking about the declaring part, or you want to store these values? Yeah, values. Yeah, that's why I'm saying that for that purpose only array comes into the picture. Are you getting my point? Because A means whenever you are writing A, int means it is allocating a single memory for an integer. So you can store only one value. Getting my point? Yeah. So whenever you want to store a single value of a numeric, actually this line is only allocate one block, something like that. It will allocate one block for the integer. So now what will happen? If it is allocating one block for integer, so you can store only one, like A,
like B, like C. Getting my point? Yes. So now if you want to use single reference variable like A, B, C, but when you want to store multiple values using that, so you use the concept of array. In array, what is the difference? You are telling R equal to new int 5, means allocate a memory for 5 integer variables. Getting my point? Yes. Now, how you are storing the values, because you have only one reference variable, so you use the combination of reference plus indexing. Indexing means internal division. First division is called 0, then 1, then 2, and then 3. So you are saying R0 means where it will go and store the value? First part, R0. Where it will go? Here. 4 will go here. Getting my point? Yes. R0. Whole block is R. R0 means first one. Now you want to store the 6 here. You will write R1. R1 equal to 6 means it will go to the R, and in the R it will go to the first location 6. So in this way you are using the combination of reference and your indexing. R2 2 means where it will go store to in the third location. 2 means the third location. Yes or no? Yes. Yeah, so it will store 2. So you will see the first benefit is that with the help of actually array, you are storing multiple values using single reference variable. Now you can say R2, then you can R3. R3 will be 8. Yeah, and then R4, and R4 will be 1. So it means you have seen you are using the indexing concept here, but actually how many reference variable you are using? Only one, R. And here you are using 5. So first benefit is that with the help of array, you can use single reference variable to store multiple values. Now the thing is that how you are able to use the indexing, because the first quality, the first benefit of array is in array, the memory allocation is continuous. Memory allocation is continuous. Means it will allocate whole the blocks at one place. 0 is just after 0, it is 1, then 2, then 3, and then 4. Yes or no? So all the memories are in the same sequence. Yes or no? But if you go in the previous approach, memories location can be different. One is located here, another is located anywhere in the memory, third is anywhere, fourth is anywhere. Getting my point? Yes, sir. So this is the benefit, that whenever you declare 5 variables independently, in case your memory allocation can be anywhere, it will be distributed. Sometime it is stored in this place, sometime it's stored this place, this place. But in case of array, it is called continuous memory allocation. What do you mean by continuous memory allocation? All the variables will be stored in the same sequence. Yes or no? You are getting my point? Yes, sir. You can say every 0, 4, then 1, then so every you can say it is occupying the whole block, and whole block within the whole block, all the values are stored in the same sequence 1, 2, 3. So it is not taking memory anywhere else. So this is the benefit. And what is the benefit? When you are using all the variables at a single location or in a single continuous sequence, actually your operation will be fast. Your operation will be fast. Can you tell me why I'm saying that operation will be fast? Can you guess why operation will be fast? Elements. Sorry? Like while reading the elements or some the stuff, it will be so it will be easy. Yeah, it is something. Yeah, it is something like that. What happens that when I was saying that, can you make a sum of all the numbers? So you will take a variable like sum, and how you make a calculation? A plus B plus C plus D plus E. Yes or no? So how the calculation is going to happen? When you are saying A, means it will go and find where A is storing the value. Yes or no? It will go and find where A is stored. So actually, in your previous case, A is storing somewhere anywhere in the memory. So it will take time to go to that location. Then it will fetch the value of A, and then you will say B. So it will again go and search the whole memory to find the second value. Yes or no? It is something like that. In a class, students are distributed. All the girls and all the boys are distributed. So now if I want to collect that, how many girls are there? So I have to do one thing. I have to traverse each and every row, because we do not know
In one row, maybe one girl is there, another girl is in another row, some girl in the last row. Yes or no? Yes. But if think about that, if I'm saying that in the first row, only girls will be there. All the girls will be in the first row. So how you can find it quickly? Because you don't need to traverse or you don't need to search the whole class. You will see all the girls are in the first line. So it will be easy. Getting my point? Yes. So same thing in case of normal variables, when you are declaring multiple values, every variables store the value at different location. 4 is stored here, 2 is stored somewhere else, 6 is stored anywhere. But in case of array, it starts from one place and all the values are stored in the same sequence. Sequence is same, 4, then 6, then 2, then 8 and 1. Yes or no? So Yes. calculation is always fast in comparison to the normal. If here you will make a calculation, trust me, calculation will be, suppose int result, and you will say R0. So you will know that when it will go R0. So when it will try to find R1, it know that R1 will be the just after the R0. Yes or no? Yes. So it means whenever you are storing all the values in the same location or in the same sequence, your calculation will be fast. This is one benefit. This is one benefit. Second is that whenever you are making a, you can say whenever you are making a array, your calculations can be generalized. Like for example, what happens that if I'm saying that at runtime, I'm adding one variable here, like int f, I'm storing, and you want to make a sum. So where you have to make a change in your program, you have one more variable here. Yes or no? Yes. Now I will show you what happens in case of array. Suppose somebody is giving you a collection of array, like he has given, I'm giving you an array of R, I'm storing some variable here. Just make a sum of those numbers. Okay, so you can write a general code. Just see here. In the array, there is a keyword. When I will say R dot, you will see a keyword length. Are you able to see a keyword length last? Yeah, length. Yes. So what is the benefit of this? Whenever you are declaring the array, and if you want to get how many elements are there, you can get it with the help of a keyword length, and you can store in a variable int ARR LENGTH. So you can store. Now how you can utilize it in your logic? Here you can say, you can write a general logic. Just see here. For, okay, I think I have not told you about the loop. So let me do one thing. Let it be in the same way here. I will tell you about this thing in the future. Okay, when I cover the loop. Okay, tell me, this is the benefit. Second thing, tell me, there are two drawbacks of the array. There are two drawbacks of the array. What is the drawbacks? First is, now here you have declared the array of 5 elements. Getting my point? It means you are saying that please allocate 5 memory locations. Yes or no? Yes. But if you are using only 2 or 3, so what happens? Because you have allocated the memory already in the initial stage and you are using only 3, so 2 will be waste. 2 will be waste. So this is one drawback of the array. Second thing is that it is something like that. If you have declared the array, like you have declared the array 5, and if you want to store the values, you can store only 5 values. If you will try to go beyond that, it will give the error. Let me show you how many values are you are given, 5. And if you will try to store more than 5 values, like R5, it will be the 6th value. Yes or no? Yes. Because your indexing start from 0, so you have already stored 5 values. When you try to store 6 value at runtime, it will throw the error. Error. Because I have told you already, this is the concept of array. Before using the array, you have to give the size of the array. So two drawbacks are there. If you have given the size 5, you are using less, you are wasting the memory. If you are given the 5, you are trying to use the more, you are getting the error. Getting my point? Yes. So these two things will be, you can say short. These two drawbacks are, you can say, solved in a topic in Java that is called collection. So that topic we will learn
after some time. Is it okay? Yes. Okay. Yes. Okay, so now after this, let me come back to your string class, because in the string class, I have shown you one function was there, and that function was str1 dot split. There was a function split. What was the return type of split? Array of string. Yes. Yeah. I hope I have told you about that, how you can read the syntax of function in the Eclipse. Whenever you make a dot, it shows the function. First is the name of the function. After colon, it is telling you the return type of the function. Return type. And after hyphen, it tells about the class which contains this function. Okay, so in the split, you can say again, just see. First is the name of the function. How you will understand this is a function, not a variable, because function will always be suffixed by a bracket. Bracket. Okay, this indicates that it is a function. Okay, I can show you another. If you go to the array, when I'm saying that r dot, so you will see it is showing the length. Length is not suffixed by a bracket. So length is not a function. Length is a keyword. Clone is a function. Equal is a function. Glass is a function. Getting my point? Yes. So whenever you are able to, in the same way you have learned that whenever write student object s dot, whenever I want to see student dot, it shows property as well as functions. Property is always shown without the bracket, and function always visible with the help of bracket. Okay, now come back to the point here. It means again, just see here, whenever you click dot on any class, it shows the name of the function. Bracket means it is the name of the function, and if bracket contains something, it is called parameter. It is called parameter. So it is taking one parameter, string regex. What after colon, it specifies what is the return type of the function, which is string. And after hyphen, it is giving who is the owner of this function. It means in which class this function exists, string. So I'm going to call it string. Okay, split. And what is the regular expression? You can break your strings on the basis of some character, some alphabet. So I want to break my string 1 on the basis of space. On the basis of space. So I want to split Pradeep separately, Chand separately, Nalwal separately. So how I can do it? In the split, you are saying str.split, and you can say double quotes space. So what it will do? It will split your string into the array, and every part of the array will contain the one element. So let me show you string array. I will say name L. So now what happens? Already first part will be stored in the 0. Where it will store the first part? So when I will say name 0, what it will display? Deep. Yes. Okay, what happens? What happens? Sorry. Yeah, in the starting is also, that's why it is showing this one. Okay, so let me run it. Now it is showing the Pradeep. Who is not getting this thing? If you are not getting that, you can let me remove this all so that you can see all the things that's going on. Now tell me, who is not getting this thing? This was the string. You call a function split, and the split you can give the, it is also known as delimiter. We call it delimiter. So you can give any delimiter to split your string into the parts. So how many parts there will be for string 1 on the basis of space? 3. First part, second part, and third part. So first part is stored in the name 0. Second part will be stored in the 1. If I will print name array 1, it will print Chand. If I will say 2, it will print Nalwal. Who is not getting this point? I want everybody to understand. Ashish, Sudhakar, Tanu, Niharika, Manjunath, you are getting this point? Yes. Okay, so with the help of a split, actually you can take this benefit. And there is also one more function, is something like that. Let me show you that. str1 dot. Here was something char
there was some char array. Yeah. Let me some. This one, to char array. Okay, there is a function string on dot to char array. What is the return type of this function? Character array. Yes, after colon, every time you have to follow this thing. After colon, it is return type of the function. And after hyphen, last thing is the name of the class in which this function exists. So it will return char array. So you will call this function and you can store in a char array. Simple, right? char. How you will define the char array? In this way. And here you can say my characters. You can take any variable name. Okay, now tell me, if I will write my characters here and I will write 0, what you will get? Tell me. Guess. क्या मिलेगा? P. Yes, ये क्या करता है? What is the use of this function? ये function आपको क्या करता है? आपका it splits your whole string into the individual character. एक करके array को एक character को किसमें डाल देता है? एरे में. तो अगर मैंने if I've given str1.2 char array, तो ये पूरी स्ट्रिंग को कैरे में किसमें डाल देगा? एरे में. पहला अल्फाबेट, पहला पार्ट. If I'm going to write it 1, what it will print? Who's going to? Everybody try to give the answer. Yes. R. Yes. तो ये क्या करता है? आपका whenever you are giving the split का पर्पस है, you will define that what will be the split character. स्प्लिट करेक्टर क्या होगा? किससे स्प्लिट करना है? ठीक है, चलो आपको और भी दिखाता हूँ. कैरेक्टर में क्या करता है? मैं कैरेक्टर में क्या करता है? इसको पता है कैरेक्टर मतलब हर कैरेक्टर को तोड़कर इसको क्या बना देना? उसको एरे में डाल देना. ठीक है. अब मुझे आप बताओगे, अगर मैं अपनी प्रदीप वाली स्ट्रिंग में कुछ लिखने जा रहा हूं, PRA कॉमा, फिर लिखने जा रहा हूं चंद कॉमा. अब मुझे आप बताओ, अगर मैं यहां पे लिखता हूं, स्प्लिट में लिखता हूं कॉमा, तो कोई मुझे बताएगा व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर दिस वन? नेम एरे 0. क्या प्रिंट करेगा? नेम एज 0. वेरी गुड, यू गाइज आर गेटिंग. जैसे करूंगा तो ये क्या करेगा? इसको स्प्लिट करेगा कॉमा से. कॉमा इज अ कैरेक्टर, तो कॉमा. अब कॉमा के बाद अगर इफ आई हैव रिटन 1, तो कौन सा नेक्स्ट बनेगा? व्हाट विल द वन? ध्यान से बताना. दीप. केवल दीप नहीं, क्योंकि कॉमा जब बना तो कॉमा का मतलब यहां से यहां तक कॉमा. गेटिंग माय पॉइंट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, स्प्लिट मींस वो इससे स्प्लिट कर रहा है. उसे स्प्लिट करते वक्त एक ये मिला, एक ये मिला. गेटिंग माय पॉइंट? आई वाज गेटिंग दैट यू मे बी कंफ्यूज्ड, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस एग्जांपल. तो स्प्लिट का मतलब कुछ भी हो सकता है. कभी कभी क्या होता है मैं बताऊं, आपके ऐसे लिखा होगा, यहाँ पे डॉलर लिखा होगा, है ना? कहीं लिखा होता है. अब आपको क्या करना है? यहाँ डॉलर लिखा है, कहीं तो डॉलर से स्प्लिट करना है, तो स्प्लिट कैरेक्टर क्या हो जाएगा? डॉलर. गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसा कभी कभी डेटा हमारे पास आता है कि जिसमें हमें ऐसा करना पड़ता है. ठीक है. जनरली सबसे बेस्ट एग्जांपल तो यही है. इफ यू हैव ए कंप्लीट नेम, आपसे प्रोग्राम बोलेगा उसे स्प्लिट कर दो, इसमें से फर्स्ट नेम निकाल दो, लास्ट नेम निकाल दो या मिडिल नेम, तो आपको वो बताएगा कि आपका जो स्प्लिट है वो किससे हो सकता है. स्प्लिट नहीं बताएगा, बट ही विल इज गोइंग टू टेल यू दैट एक्चुअली फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम इज सेपरेटेड बाय स्पेस. ठीक है. तो आप इसका यूज कर सकते हो. तो ये जो दो फंक्शन है, इसका भी these two function are also very very much used in your automation. इनका भी बहुत यूज होता है स्प्लिट का. आपके प्रोग्राम में, आपके लॉजिक में इनका बहुत यूज होता है. क्लियर है? यस. ठीक है. तो हमने क्या कर लिया? हमने पढ़ लिया एरे भी. एक बार मैं आपका सिलेबस भी ओपन करता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है 2-3 बैच जो है, 3 बैच से ना थोड़ा सा ये भी हो जाता है. मुझे लग रहा है कि टॉपिक हम आगे पीछे भी कर देते हैं. तो आपको देखना है कि क्या क्या मैंने कवर किया जावा में. आप मुझे बताना क्या क्या कवर किया मैंने जावा में. मैंने आपको जेडी के इंस्टॉलेशन हो गया, ऑब्जेक्ट आपको बता दिया, क्लास बता दिया, मैंने आपको मेथड्स बता दिए. व्हाट इज मेथड्स इन जावा? इनपुट, आउटपुट. यस, 4 कॉम्बिनेशन. यस. आप मुझे बताना, क्योंकि मेरे को ना हो सकता है आई कैन बी लिटिल बिट कंफ्यूज कि 4 बैच होते हैं तो उसमें कभी कभी ऊपर नीचे होता है. वो भी अब आज जो 3 बैच है वो आप ही के पैरेलल चल रहे हैं, आप ही के आसपास सिलेबस चल रहा है. तो यू कैन टेल मी, मैं आज वैसे चेक कर लूंगा. मेथड्स पर आए, किसी को याद है? यस, 4 कॉम्बिनेशन. हाँ, 4 कॉम्बिनेशन मेथड. ग्रेट. आपको मेथड पढ़ा है. कंस्ट्रक्टर पढ़ा दिया आई थिंक.
Yes. हाँ जी, कंस्ट्रक्टर पढ़ा दिया। अब आपको मैंने डेटा टाइप आपको जो है ऐसे ही पढ़ाते हैं। डेटा टाइप एक आपका प्रिमिटिव, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा प्रिमिटिव क्या होते हैं, नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं। वेरिएबल्स मैंने आपको बता दिए। वेरिएबल्स आपके 3 तरह के होते हैं, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंट वेरिएबल और क्लास वेरिएबल। ये मैंने पढ़ाया, आज मैं अलग से स्पेशली आपको बता रहा हूँ। जब भी कोई वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब यू हैव डिक्लेयर्ड दिस थिंग, आपने ये अगर डिक्लेयर किया है कहाँ पे, क्लास लेवल पे। कहाँ पे डिक्लेयर किया है, क्लास लेवल पे। क्लास लेवल का मतलब सीधे क्लास के अंदर। अगर ये क्लास का डिजाइन है और आपने सीधे कहाँ दिया, क्लास के अंदर, तो दिस इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको, इंस्टेंस वेरिएबल। अगर इस प्रॉपर्टी, इफ यू आर यूजिंग अ वन कीवर्ड विद इट स्टैटिक, तो ये क्लास के लेवल पे होता है आपका यही इंस्टेंस वेरिएबल। अब इंस्टेंस की जगह कहलाएगा क्लास वेरिएबल। क्या कहलाएगा, क्लास। क्लास। बिकॉज इट स्टैटिक मींस इट इज शेयर्ड फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। इट इज शेयर्ड फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स, तो क्या बन जाता है, क्लास का वेरिएबल। क्लास। तो 2 कंडीशन होती है, एक क्लास के, डायरेक्ट क्लास के ब्रैकेट के अंदर 2 ही चीज मैंने बताई है, या तो प्रॉपर्टी होती है, इट कैन हैव प्रॉपर्टी, इट कैन हैव फंक्शंस। If you are giving the property without the static keyword, it is called instance variable. If you are using the static, it is called class variable. और अगर आपने यही वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर दे दिया, समथिंग लाइक दैट, यहाँ पे देखो मैंने सी एक वेरिएबल बनाया, कहाँ पे, इस फंक्शन के अंदर लिखा है ना, फ्लोट सी डिक्लेयर किया है, Yes. देन इट इज कॉल्ड लोकल। लोकल वेरिएबल। तो 3 तरह के वेरिएबल होते हैं। अगर आपने क्लास के अंदर वेरिएबल बनाया है तो उसी में होता वही वेरिएबल है, बट इट इज नोन एज प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी 2 तरह की होती है, अगर स्टैटिक नहीं है तो और ऑब्जेक्ट की अपनी होती है। ऑब्जेक्ट को हम आल्सो वी नोन ऑब्जेक्ट एज आल्सो इंस्टेंस, तो इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। स्टैटिक लगा दिया, क्लास वेरिएबल। और अगर वेरिएबल वी हैव डिफाइंड समथिंग विद इन एनी फंक्शन, किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है, दैट इज कॉल्ड लोकल। क्लियर है? Yes. तो सारा टॉपिक यहाँ पे जो नहीं होगा आप मुझे बताना। एक्सेस स्पेसिफायर मैंने कवर कर दिया है, पब्लिक, प्राइवेट, डिफॉल्ट, हाँ 3 कर दिए। तीनों कवर कर दिया। मैंने आपका लूप कवर किया है, यस। लूप Yeah. कवर किया, ठीक है। मैंने आपका डिसीजन मेकिंग इफ एल्स कर दिया है। Yes. तो आप लोग ने में से किसी ने मुझे ये नहीं बताया अभी कि जब मैं एरे बता रहा था कि मुझे यहाँ पे आपको लूप बताना है, मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा, किसी ने बोला ही नहीं। वही मैं देख रहा था कि मैं सीक्वेंस से फॉलो करता हूँ। No, मैंने बोला था लूप के लिए, आपने स्टार्टिंग में बोला था तो। अच्छा, लूप हमने कवर किया ना, तब तो देखो, तब तो वापस आ जाओ यहाँ पे। मुझे लगा डाउट, वैसे मैं सीक्वेंस ही फॉलो करता हूँ, लेकिन मैंने कहा आप लोग, मैं आप लोग को ज्यादा सच मानता हूँ, ठीक है, मैं झूठ बोल सकता हूँ, आप नहीं। Okay, so हम कभी कभी बोल सकते हैं ना कि ये नहीं पढ़ा है। हाँ, कभी कभी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं आपको, आई वाज टेलिंग यू अबाउट द बेनिफिट ऑफ एरे, कि अगर आपने यहाँ सम किया तो सम में आपको देखो हर बार यहाँ पे चेंज करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे एक लॉजिक आपका बेनिफिट है एरे का। क्या? बिकॉज एवरीथिंग इज रिटन इन द सेम सीक्वेंस। तो अगर कोई एक एलिमेंट स्टोर करेगा तो क्या करेगा, यहाँ पे लिख देगा 6 और यहाँ पे एक एलिमेंट बढ़ा देगा, है ना। हाँ। आपके लिए जो सम का कोड है देखो कैसे कॉमन लिखा होगा, फॉर ये करूंगा, देन आई यूज अ लूप। एक मैंने वेरिएबल बनाया इंट i इक्वल टू 0, है ना। और देखो ये लूप कब तक मुझे सम करना है, जब तक ये सारे एलिमेंट सम ना हो जाए। तो देखो लूप चलेगा i लेस देन कहां तक चलेगा, जो मेरी एरे की लेंथ है, और वो मुझे कहीं से निकालनी नहीं है, मेरे पास एक कीवर्ड है r डॉट लेंथ, तो रन टाइम पे एक्चुअल लेंथ निकाल देगा। यस। अपने हाथ आपकी इंडेक्सिंग इससे कम चलेगी, यहां लिख दो i प्लस प्लस। आप एरे में चाहे जितने वेरिएबल ऐड कर दो, कोई भी कर दे, आपको वो एरे कहेगा ये r है, इसका सम कर दो। आपको कितना भी पढ़ाओ आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके अंदर कोड कॉमन होगा। क्या कोड होगा, आप एक वेरिएबल ले लोगे जैसे आपने ऊपर लिया है, जिसमें आपको टोटल देना है, सपोज दिस इज टोटल, ठीक है, और टोटल में बाय डिफॉल्ट अभी 0 रख लो, ठीक है। उसके बाद देखो अंदर कैसे सम करेंगे, देखो ध्यान से देखना, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस आर एरे, और यहां पे लिख दूंगा 0 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा आई। क्यों आई लिखूंगा, क्योंकि अब मैंने जनरल कोड लिख दिया है। जब ये लूप पहली बार चलेगा, when this loop will run first time, what it will do, it will run total is 0, r1 r0 is 4, ये दोनों का सम, what will be the sum of total plus ri, 4, and 4 will store in the again in the total variable। जो भी आपने सम किया दोबारा किस में स्टोर कर दे रहे हो आप, टोटल में। तो आप मुझे बताओ आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन, एक बार जब लूप चलेगा पहली बार, टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। अगली बार जब लूप चलेगा i प्लस प्लस होगा, लूप के अंदर आया, पहले राइट साइड की चीजें चलती हैं, तो टोटल की वैल्यू थी 4 और r ये हो जाएगा r1 की वैल्यू हो गई 6, क्या हो गई
तो 6 4 + 6 हो जाएगा 10 10 और दोबारा हाँ। 10 को किस में स्टोर कर देगा, फिर से टोटल में। टोटल में। टोटल पे। तो ये लूप हर बार चल रहा है, राइट साइड में सम करता जा रहा है टोटल। तो इसका मतलब व्हेन द लूप विल कंप्लीट, ये देखो SYSO, अगर मैं टोटल को प्रिंट कर दूं तो क्या देगा, सारे नंबर का sum। तो सम। ये देखो, और ये क्या फायदा है कि आपको अगर ये काम, 29 इफ यू वांट टू परफॉर्म दिस टास्क इन द नॉर्मल, तो आपको देखो हर जगह चेंज करना पड़ता। आपको यहाँ वो कहता मैंने एक वेरिएबल आपको बढ़ा दिया, तो आप अपने लॉजिक में भी बढ़ाओगे, है ना, FG। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ बढ़ाता हूं तो मेरे सम का लॉजिक कभी चेंज नहीं होगा। देखो बढ़ा के देख लो, इसको मैं करता हूँ 7। ये मतलब मैं कह रहा हूँ कोई देने वाला, कोई somebody is giving you इनपुट, कोई इनपुट दे रहा है आपको कि भाई मैं आपको एरे में एलिमेंट बढ़ा दूं घटा दूं, आप मुझे कॉमन लिखो, तो देखो बड़ा आराम से वो आपको एरे बढ़ा के देगा, तो ऐसे वैल्यू स्टोर करके आपको दे देगा। आपको कहेगा ये ले लो R, आपके लिए आसान है, क्यों, आपका देखो लॉजिक अभी सेम काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, यस। क्योंकि रीजन इज दैट आपने कोड लिखा है आई से स्टार्ट करो, जो भी लेंथ है भाई वहां तक जाओ और सबका सम कर दो। You got the benefit, and this is more fast than this approach. Getting my point? यस। लेकिन I बस have one doubt. Sir. yeah, I have tell one me. doubt. Yeah, tell Actually, me. Tell me. in the for loop, so I have used that total like variable 2 times now. So will the Java application will not like confuse or crash? No, no. You are saying that 2 times. Where I'm using 2 times? Actually, you have stored the 0 value in the total variable in the, Right. in data type, right? Right. So in the it's like next to the for loop, again you had used the same total, right? So yeah, it is something like that. Don't confuse it. Let me tell you one thing. Okay, tell me one thing. I will give you the separate example. Just forget about everything. You are using a variable here, int a equal to 4. You are using. Are you using this one? Yes. Okay, here what is the meaning of int a? Maybe you are a little bit confused. Let me tell you again. It is actually divided in 2 parts. This part is known as declaration. This part is known as declaration. And this is called initialization. Right? Initialization. We can divide in 2 parts. Let me divide in 2 parts. Only write first thing int a and like semicolon. What do you mean by semicolon? You are declaring a variable a. Is it okay? Yes. Then you are initializing or storing some value 4. Now, if you want to reassign value, you simply write a equal to. So it is not creating any new memory. The previous value of a was 4. Now the new value of a become 6. So in the same way, you have declared a variable total 0. So it has created a variable total and storing 0. After that, you are using the same variable for storing the total. So actually you are in the loop, you are again changing the values, but variable is same. Getting my point? Yes. Okay, So it is not creating. If it is creating multiple variables, then it is storing, actually taking the memory. Getting my point? Yes. तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे देखो मैंने int टोटल लिखा है, अगर ये मैं int टोटल दोबारा लिखता तो ये क्या करता, 2 बार मेमोरी लेता। और पहली बात तो आपको एक क्लास के अंदर एक ही जगह पे एक नाम से 2 वेरिएबल दे ही नहीं सकते। ये देखो, अगर आप डिक्लेयर भी करोगे एरर दे रहा है, क्या कह रहा है, डुप्लीकेट। क्या दे रहा है, डुप्लीकेट। सो इट मींस विद द हेल्प ऑफ वन। आप कहां स्टोर कर सकते थे मैं बताऊं, अगर एक टोटल वेरिएबल आप देना चाहो तो किसी फंक्शन के अंदर कहीं दे सकते हो, क्योंकि लोकल वेरिएबल इज डिफरेंट एंड द क्लास वेरिएबल इज डिफरेंट, है ना। अगर आप किसी फंक्शन के अंदर, देखो मैं आपके लिए कोई फंक्शन बना देता हूं आपको दिखाने के लिए, मेन फंक्शन है, मेन सॉरी फंक्शन के अंदर ही तो है। आपको मैं एक फंक्शन अलग बनाता हूं, उसके अंदर देखो टोटल ले लूंगा मैं, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, एक अलग फंक्शन बना, दिस इज सेपरेट फंक्शन। इसके अंदर देखो मैं टोटल नाम से बना दूंगा, कोई मुझे नहीं रोकेगा, क्योंकि ये लोकल अलग है और वो ये लोकल अलग है। अलग। गेटिंग माय पॉइंट? ये देखो, अच्छा मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, कोई एरर आ रही है? नो। क्योंकि ये टोटल किसका लोकल वेरिएबल है, इस डिस्प्ले फंक्शन का, और दूसरा वाला टोटल मेन का है। अगर मैं इसको बना देता यहाँ पे ऊपर, तो देखो यहाँ पे भी एरर नहीं देगा, क्योंकि ये भी एक अलग है। ये किसका वेरिएबल है, क्लास का। क्लास का। ये देखो सारे अपनी अपनी सब अपनी बाउंड्री में। कुछ ऐसा समझो, फनी एग्जांपल, आपके घर में आपके 2 बच्चे हैं, ठीक है, आपके घर में सॉरी टेक द एग्जांपल, आपके घर में एक बच्चा है जिसका नाम राहुल है। आप अपने पड़ोसी से थोड़ा बोलोगे कि अपने बेटे का नाम राहुल मत रखना, क्योंकि उसके बच्चे का नाम राहुल है, तो वो कैसे जाना जाएगा कि भाई उसके बेटे का नाम राहुल अलग है, आपके बेटे का नाम राहुल अलग है। लेकिन आपके 2 बेटे हैं, दोनों का नाम राहुल रख सकते हो? नो। नहीं। तो ये कुछ ऐसे ही है कि एक ही जगह पे 2 नहीं रख सकते। एक क्लास के अंदर 2 वेरिएबल एक साथ रख दोगे प्रॉब्लम, एक ही फंक्शन के अंदर 2 वेरिएबल एक जैसे रख दोगे तो 2 लोकल वेरिएबल में एम्बिगिटी हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एम्बिगिटी। एम्बिगिटी मतलब कंफ्यूजन।
हो जाएगा कंफ्यूजन? Yes. तो लेवल अगर आपके अलग अलग है तो कर सकते हो। क्लास लेवल पे जो होता है वो अलग, फंक्शन लेवल पे होता है अलग, और दो फंक्शन के अंदर तो कोई मतलब ही नहीं है। ये आपका घर है जिसके अंदर ये राहुल है, और ये दूसरा घर है जिसके अंदर ये राहुल है। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. ग्रेट। नाउ थिंग इज क्लियर दैट यू आर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल हियर। अच्छा, यहाँ पे मैंने जीरो क्यों किया, ये बहुत अच्छी चीज है, बताता हूँ। अगर मैं जीरो नहीं करूंगा तो एक एरर देगा, बताता हूँ। एक एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, ध्यान से देखना। क्या दे रहा है? व्हाट इज द एरर इट इज गिविंग? अच्छा, एक कंडीशन होती है, जब भी कोई क्लास का वेरिएबल आप बनाते हो तो उसके अंदर कोई डिफॉल्ट वैल्यू आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट वैल्यू देता है। इस टोटल की डिफॉल्ट वैल्यू क्लास लेवल पे क्या हो जाएगी? जीरो, अगर कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। लेकिन फंक्शन के अंदर अगर कोई वेरिएबल बनाते हैं लोकल, तो लोकल वेरिएबल को इस्तेमाल करने से पहले उसकी वैल्यू किसको देनी पड़ती है? आप। मेरी बात समझ रहे हैं? Yes. आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, आपको कुछ वैल्यू देनी। इसीलिए मैंने इसमें जीरो रखा, क्योंकि मुझे पता था मेरे सम के केस में अगर मैं डिफॉल्ट वैल्यू जीरो दे दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मेरे को सम करना है, इस जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सम में जीरो ही तो ऐड हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. जैसे कि कहीं मैं मल्टीप्लाई करता और मुझे मल्टीप्लाई के लिए वेरिएबल इस्तेमाल करना पड़ता, तो मैं पता इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या लेता? 1, क्योंकि किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. तो यहाँ पे लोकल वेरिएबल के साथ एक कंडीशन है कि इसे आपको इनिशियलाइज करना ही पड़ता है अगर इस्तेमाल करना है। इज इट ओके? Yes. चलिए, अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि कभी कभी आपको जब आपके यहाँ पे यू आर ऑल्सो डूइंग द टू थिंग्स, दिस इज कॉल्ड एरे डिक्लेरेशन। यहाँ पे एरे को क्या कर रहे हो? डिक्लेयर कर रहे हो। कि आपने बताया कि एक आर है एरे एंड इट विल कंटेन 7 एलिमेंट, और उसके बाद आपने 7 एलिमेंट्स को अलग में स्टोर किया। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. तो एक बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था, क्या यहाँ पे भी ऐसा कर सकते हैं? जैसे देखो मैंने किया, यहाँ ए को डिक्लेयर, आई हैव डिक्लेयर्ड द ए, देन स्टोर द वैल्यू 4 इन द ए। सो आई हैव डिवाइडेड इन टू पार्ट, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। तो एरे को भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन एरे, दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। दोनों को एक साथ करना है। ध्यान से देखना क्या करोगे। आपके सामने एक नया एरे बनाता हूं जिसमें आई विल डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एट द सेम टाइम। यू हैव टू राइट इंट दिस वन, एरे का नाम रख लेते हैं मान लो टी, और इक्वल टू, ध्यान से देखना, इसमें लगाते हैं वी यूज कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज आप दोगे, मैंने लिखा 3,8,4, कुछ नहीं करना, ये एरे बन गया। अभी एरे करता क्या है? जितनी वैल्यू आप इसमें देते हो, इनडायरेक्टली क्या करता है, मेमोरी में डिक्लेयर कर देता है कि आपका एरे बन गया 3 साइज का। वट एवर वैल्यूज यू आर गिविंग, अगर आपने इसमें 4 वैल्यू दे दी तो रन टाइम पे कितना बन जाएगा? 6, 1, 4. अपने साइज। आपको देखो, अगर आपको डाउट है तो आपको प्रिंट करके दिखाता हूं। अगर मैं इसके बाद आफ्टर दिस लाइन इफ आई एम राइटिंग T2, देखना क्या प्रिंट करेगा। क्योंकि अपने आप क्या करेगा, जो भी इसने बनाया है वो डिक्लेयर करके इसको पहले इंडेक्स में डालता है, दूसरा, तीसरा, चौथा। मेरी 2 के हिसाब से बनेगा 4, है ना। आप चाहो तो देखो, मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। सो दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ द एरे एट सेम टाइम। हो गया सही? तो ये कब करते हो? जब आप अपना कोई एरे बनाओ तो ऐसे करो, आसानी से हो जाए। क्यों लिखो ऐसे लाइनें, है ना। और जब कोई और बनाता है, अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि कोई और आपको बना के देगा, जैसे कि आई विल गिव द बेस्ट एग्जांपल। यहाँ पे कौन बना के दे रहा है आपको? आपने str पे स्प्लिट फंक्शन कॉल किया, स्प्लिट फंक्शन आपको बना के दे रहा है जिसको आप अपने में स्टोर कर रहे हो। सही कह रहा हूं? Yes. आपने तो एरे में डिस्प्ले नहीं किया। सेम चीज आपने, यू हैव कॉल्ड ए स्ट्रिंग डॉट कैर एरे, आपने कैरियर फंक्शन इस पे कॉल किया है। इसके एक एक एलिमेंट का एरे बना के किसने दिया आपको? 2 एरे ने। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. तो ये होता है बेनिफिट। अगर आप खुद बना रहे हो तो इट विल एडवाइजेबल यूज दिस वन। एक ही लाइन में करो ना, आप ही बना रहे हो, आप ही। अगर कोई और आपको बना के दे रहा है, यू यूज सेकंड कॉन्सेप्ट। ठीक है? Yeah, Pradeep, 1 second. Here we can add. We can add same function. No? If we want to add the value. राइट, यू कैन यूज जस्ट हियर। मैं इस फंक्शन में देखो क्या करता हूँ, एरे का नाम आर है, इसको टी कर दूं, हो गया सारा काम आपका। ये देखो, ठीक है। और यहाँ पे भी टी लिखना पड़ेगा, ये देखो, बिकॉज everything is same, only you can say the way of declaring and initialization is different. ये देखो, आप पहले सम करके देखो, 3 ये हो जाएगा 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और 3 21। चलो प्रोग्राम को चला के देखते हैं, यहाँ पे सम को हटा देते हैं। तो I have told you only the way of declaring and initialization is different. हो गया 21?
Or if we don't want to add a whole like 4 things, only 2 value, then तो आपको देखो, आप ये तो आपको डिसाइड करना है। आपने यहाँ पे लूप लेंथ तक चलाया है, तो आप कहाँ तक चलाओ, yes. तो आप केवल ये चलाओ। लेस देन 2 का मतलब Okay. 0 और 1 इंडेक्स को लेगा, राइट? Yes. तो ये Yes. आपको डिसाइड करना है। Yes. Okay? Yeah, got it. So now this is all about the, you can say, array. This is all about the string, and you have learned today very, very important thing. What is the use of two array and two char array string? And this is very, 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 very used in your logic. आपके प्रोग्राम में तो यूज होता है, इंटरव्यू में आपको जितने वो देगा उसमें से कुछ आपको प्रोग्राम होते हैं जिनके लिए आपको स्प्लिट का यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने स्ट्रिंग बताया, अब स्ट्रिंग का यूज करके, इफ एल्स का यूज करके और स्प्लिट का यूज करके आप कई सारे, यू कैन क्रिएट मल्टीपल प्रोग्राम्स व्हिच कैन बी आस्क्ड इन द इंटरव्यू। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. इसमें आपने देखा इस आपका रिप्लेस भी होता है, तो कई तरीके से आप इसको यूज कर सकते। एक बहुत अच्छा कॉमन है, आप बताना, आपका असाइनमेंट है, यहीं पे आप बता सकते हो लॉजिक। मुझे इसमें से स्पेस को हटाना है, इस स्ट्रिंग में से स्पेस हटा देना है, मुझे लिखना है प्रदीप विदाउट स्पेस चंद विदाउट स्पेस नैलवाल इस स्ट्रिंग में। कैसे करेंगे? अगर आपने इफ यू कैन रिमाइंड द स्ट्रिंग फंक्शंस तो आप कर सकते हो। सेमीकोलन में रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस में क्या डालेंगे? बिल्कुल सही, रिप्लेस आंसर, रिप्लेस द आंसर। रिप्लेस में क्या लिखोगे मुझे बताओ? स्पेस की जगह स्पेस हटा देंगे सर। यस वेरी गुड। देखो ध्यान से क्या करेंगे, आपको ऐसी लॉजिक बनाने, हमारा काम सब कुछ है यहाँ पे। str1 को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इससे पहले देखो क्या लिखूंगा, str1 इक्वल टू str1 डॉट, और यहाँ पे करूंगा रिप्लेस। रिप्लेस में ध्यान से देखना क्या करूंगा, रिप्लेस में करूंगा जो आपका ये स्पेस, ऐसी स्पेस है ना, यस इसको डबल कोट्स लिख दूंगा बिना स्पेस के, चला जाएगा, चला जाएगा। देख लो प्रिंट करके। तो छोटे छोटे कभी ऐसे होता है कि दे आर स्मॉल प्रोग्राम्स और आप सोच नहीं पाते हो गया खत्म। Yes. तो ऐसे सब कुछ है आपके पास, एवरीथिंग इज अवेलेबल। आपको सिर्फ सीखना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीखोगे। गेटिंग माय पॉइंट? आफ्टर सम Yes. टाइम आई एम प्लानिंग टू पुट सम प्रोग्राम्स आल्सो ऑन द यूट्यूब, क्योंकि मैं यहाँ पे सारे प्रोग्राम नहीं बता सकता, तो मैं करीबन 20 अच्छे प्रोग्राम कि यूट्यूब बना के आप लोग को दूंगा। आप उससे प्रैक्टिस भी करोगे। वो आप बनाऊंगा ऐसे कि उसका पहले प्रोग्राम आपका असाइनमेंट दूंगा, फिर थोड़ा गैप दूंगा टाइम का, ताकि आप अपने यूट्यूब को पॉज करो, उस प्रोग्राम को बनाओ, फिर आपको नहीं समझ आता है प्ले करो, आगे आपको प्रोग्राम भी मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. So I'm planning this and soon you will get it on your video. ये क्लियर हो गया? Yes, Pradeep. ठीक है, लेट मी कम बैक टू द सिलेबस। हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, तो हम देखते हैं। फिर भी इसका मतलब हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, क्लास ऑब्जेक्ट ये हो गया और ये हो गया। चलिए अब आपका ये भी कंप्लीट कर देते हैं आज, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट समथिंग न्यू टॉपिक। अच्छा, डेटा टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, दो होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव और होता है नॉन प्रिमिटिव, ठीक है? यस। अब प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे डेटा टाइप को डिफाइन करने के दो तरीके हैं। आई विल टेल यू टुडे समथिंग लाइक दैट। मैंने एक वेरिएबल इंटीजर लेना है, तो आपने देखा मैं ऐसे करता हूँ ना, int a इक्वल टू 5 करता हूँ ना। चलिए इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, फ्रेश टॉपिक पढ़ते हो। फ्रेश मैं आई हैव रिटन int a इक्वल टू 5। ये क्या करेगा, अगर मैं प्रिंट करूँ a वैल्यू को, क्या प्रिंट करेगा? ये 5 करेगा। Means the purpose of this a variable is to store the value 5 in the memory and point to it, right? Or if it is pointing, I can print it in my program. ये क्या दे रहा है? अच्छा, ये इसलिए बता रहा है कि स्टैटिक, इसको यहाँ पे स्टैटिक, थोड़ी देर के लिए स्टैटिक बना दो, then I will tell you what is the meaning of static in terms of here. Okay, let me run it here. 5 प्रिंट किया। अगर आपको if you want to print a numeric value for a particular variable, आप उसे ऐसे भी लिख सकते थे, int a की जगह। ध्यान से देखना, स्टैटिक int a की जगह डेटा टाइप क्या ले सकते हो? क्या डेटा टाइप ले लिया मैंने? इंटीजर। इस लाइन और इस लाइन में डिफरेंस क्या है? Here I am using int, here I am using integer. Yes or no? Yes. अब देखते हैं कि अगर मैं b को प्रिंट करता हूं तो क्या काम कर रहा है, वो भी वैल्यू कर क्या रहा है, उसका पर्पस क्या है, फिर देखेंगे डिफरेंस। Here I am printing b, दोनों के आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसका मतलब what I am trying to do with the help of, if we want to store the value b, if we want to store the value 5 in the memory, I can declare a variable a in the small int. I can do the same thing, I can declare a variable b, but the type is capital integer. Getting my point? Yes. क्लियर हो गया?
अब देखो दूसरा डिफरेंस, जब भी आप कोई डेटा टाइप इस्तेमाल करोगे, अगर आपने इसको स्मॉल में दिया है, स्मॉल में मतलब INT स्मॉल में लिखा है, तो इसको बोलते हैं प्रिमिटिव। क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप। एंड व्हेनेवर यू आर डिक्लेयरिंग इट इन द कैपिटल, जब कोई कैपिटल से स्टार्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन प्रिमिटिव। क्या बोलते हैं? नॉट प्रिमिटिव। अब आपको इसका अभी तो मैंने आपको बताया क्या, देन आई विल टेल यू होता क्या एक्चुअली। इसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव, उसमें डिफरेंस क्या होता है ये तो मैंने बता दिया इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कैसे आप पहचानोगे। अब देखो ध्यान से देखना, जब मैं लिखूंगा ए करूंगा, ए को कर रहा हूं ए डॉट, ए डॉट करने पे मुझे कुछ भी सजेशन मिल रहा है? यहाँ पे कोई फंक्शन दिख रहा है? नो। नहीं। अब जरा मैं बी करता हूं, बी करता हूं डॉट, फंक्शन दिख रहे हैं बहुत सारे? यस। तो ऐसा क्या डिफरेंस हो गया कि दोनों का काम, द पर्पस ऑफ बोथ द थिंग्स लाइक int and integer to store the values in the memory and so that we can use in program. So why it is showing the functions in the B but it is not showing the function in A? Reason is that जावा ने एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि जावा इज ए oops based language. जावा इज ए oops based language. oops based language मतलब मीन्स जावा इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा कहता है कि रियल वर्ल्ड में जैसे हर चीज ऑब्जेक्ट है, वैसे जावा में भी हर चीज क्या है? ईच एंड एवरीथिंग इज ए ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट की सबसे पहली खासियत, हर ऑब्जेक्ट की क्या होती है? प्रॉपर्टीज। हर ऑब्जेक्ट की क्या होती है? प्रॉपर्टीज। और ऑब्जेक्ट बनता कैसे? जब कोई क्लास होगी तभी ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या स्टूडेंट की क्लास हुए बिना स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनता? नहीं। तो इसीलिए जावा ने बोला कि मेरे डेटा टाइप जो होंगे वो भी आपके क्या होंगे? ऑब्जेक्ट होंगे। तो अगर ये डेटा टाइप ए को ऑब्जेक्ट दिखाना चाहते तो इसके लिए ए का टाइप क्या होना चाहिए था? क्लास। ए किसी ना किसी को प्रेजेंट करना चाहिए था? क्लास। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी डेटा टाइप आपके स्मॉल में थे इनके अगेंस्ट बनाई एक क्लास। इंट के लिए जो क्लास बनाई उसका नाम है इंटीजर। तो आप अगर किसी वेरिएबल को एज ए oops यूज करना चाहते हो तो आपको यूज क्या करना चाहिए? उसका डेटा टाइप की जगह प्रिमिटिव की जगह नॉन प्रिमिटिव। आपको फंक्शन दिखाना शुरू कर देगा, ये देखो सारे फंक्शन दिखाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो ये सबके लिए होता क्या है कि जब आप क्लास की तरह करते हो तो कोई क्लास को जब इस्तेमाल करेगा, तो जब क्लास को इस्तेमाल करेगा बी को जब इस्तेमाल करेगा, बी के सारे फंक्शन भी आएंगे। यस और नो? तो बी को यूज करना थोड़ा क्या पड़ता है? हैवी। बी को यूज करना क्या पड़ता है? इजी। नहीं, हैवी पड़ता है। हैवी क्यों पड़ता है? क्योंकि बी अपने साथ क्या क्या लेके आता है? सारे फंक्शंस। यस। और ए क्या करता है? ए का काम है फंक्शन नहीं लाना, केवल वैल्यू को स्टोर करना। तो कौन फास्ट होगा? ए वाला, क्योंकि उसका काम केवल वैल्यू को स्टोर करना है। और आपका भी पर्पस क्या है? योर पर्पस, योर मोटो इज टू स्टोर द वैल्यू। आपका पर्पस ही नहीं है फंक्शन कॉल करना। अगर पर्पस है तो यूज करो बी, नहीं है तो क्यों अपनी मेमोरी में ज्यादा से ज्यादा चीजें लोड कर रहे हो? इसीलिए बहुत लोग को पता ही नहीं होता है कि वो क्या करते हैं, हमेशा इंट ए यूज करते हैं। इंटीजर ए तो कहीं दिखेगा ही नहीं प्रोग्राम में, आपको सही बता दूं 99%। लेकिन उसका पर्पस ही होता है और हर डेटा टाइप के लिए बनाया। दिखाओ आपको, अगर स्मॉल में लिखते हो फ्लोट, लिखते हो ना फ्लोट? ये देखो मैं लिखूंगा फ्लोट बी, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया। अगर आप देखना चाहो तो कैपिटल में फ्लोट लिखो, FLOAT फ्लोट डी। आप देखो इस नाम से क्लास दिखेगी। दिखाओ, कंट्रोल के साथ क्लिक करो, फ्लोट नाम की क्लास दिख रही, फ्लोट डॉट क्लास। यस। देखो इंटीजर की भी क्लास दिखेगी। तो सिर्फ इसने एक काम किया क्या जावा ने? जावा ने बोला कि आप इस्तेमाल करो ना करो ये साबित करने के लिए कि आई एम ऑल्सो अ oops बेस्ड लैंग्वेज एंड आई एम ट्राइंग टू फॉलो दैट एवरीथिंग इन माय कॉन्सेप्ट इज अ ऑब्जेक्ट। तो उसने डेटा टाइप को भी क्या प्रेजेंट कर दिया? ये आपकी इच्छा हो इस्तेमाल करो ना करो लेकिन है। गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो इससे जावा ने बोला कि मैं oops बेस्ड लैंग्वेज हूं, देखो मेरे डेटा टाइप भी किसको प्रेजेंट करते हैं? ऑब्जेक्ट। गेटिंग माय पॉइंट? यस। लेकिन वो अभी इसको हटा नहीं रही है। इसलिए हटा नहीं रही है क्योंकि जहां पे इसका यूज करो तो थोड़ा फास्ट होता है। और आप भी देखो, कभी आपसे बोलूंगा ना 2 नंबर ले लो, कभी आप ऐसे नहीं लोगे कि इंटीजर है इंटीजर भी। आप क्या लेते हो? इंट ए एंड। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसके अंदर, और ये फंक्शन जो बने वो भी यूजलेस नहीं है, किसी बंदे को यूज आता है। देखो इसके अंदर के फंक्शन भी दिखाता हूँ इंटरेस्टिंग। इसके फंक्शन है कंपेयर। कंपेयर का मतलब क्या है? 2 नंबर को कंपेयर करो। और दिखाता हूँ आपका, देखो 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 लॉट्स ऑफ फंक्शन आ गया। मैक्स, मिन, मैक्स, मिन, बाइट, साइज, टाइप, बिट काउंट, कंपेयर। ये तो आपको पता भी नहीं होंगे कि बहुत सारे फंक्शन आप इस्तेमाल। डिवाइड, देखो आपको डिवाइड करना है, आप डिवाइड क्या करते हो? डिवाइड लिखते हो A
डिवाइड का सिंबल लगाते हो ना, Yes, sir. Yes. आपको डिवाइड करना है, यहाँ पे डिवाइड का ये यूज कर लो। लेकिन हमारे लिए ये सब चीजें पड़ती हैं, थोड़ी परफॉर्मेंस स्लो होती है। हमें अगर डिवाइड करना, हम क्या लिखते हैं, ए डिवाइड बाई बी, सही कह रहा हूँ? Hmm. तो हमें उसका पर्पस से, तो आपको यू शुड नो फ्रॉम द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव दैट व्हेनेवर वी आर डिफाइनिंग अ डेटा टाइप इन जावा, by default it is primitive, and primitives are written the small, they are not represented as a object. So Java has created classes for each and every, Java has created classes for each and every primitive type, and they are represented as non-primitive, they are represented as a class. Clear हो गया?